coin change problem. And let's see how the greedy approach will be applied for solving this particular coin change problem. Okay. So first of all, let's understand what is the basically coin change problem is. It is a famous coin change problem and it is a classic example of using the greedy algorithm. So according to the coin change problem, we are given a set of coins. Okay, listen carefully. We are given a set of coins of various denominations like 1 rupees के coins हैं, 2 rupees के हैं, 5 rupees के हैं, like this. So consider the below array as a set of coins where each element is basically a denomination. Like 1 rupees का हो गया, ये 2 का हो गया, 5 का हो गया. अच्छा, इनकी लिमिट नहीं है हमारे पास कि कितने coins हैं. So our task is to use these coins to form a sum of the money using the minimum number of coins. The task is to use these coins from the denominations and form a sum of money using the minimum number of coins. ठीक है, जैसे suppose I want to make a set of 90 rupees and I just need to use the minimum number of coins from here so that that will form the sum equal to 90. So basically it is a kind of minimization problem. Here we need to reduce the number of coins or the number of operations. ठीक है. So यहाँ पे केवल एडिशन होगा, जैसे ऐसा नहीं कि भाई हमने कॉइन्स लिए और जैसे 100 का लिया, इसमें से 10 माइनस किया, 90 हो गया. नो, वी नीड टू जस्ट पिक अप द कॉइन्स and we need to just sum up them and make a combination for particular sum. And we can assume that the particular denomination has an infinite number of coins and there is no restriction on these denomination. There can be infinite denomination, means 1 रुपए के coins infinity हैं, 2 rupees के coins infinity हैं, and so on. ठीक है. So I'm repeating again, our task is to use these coins to form a sum of money using the minimum number of coins. Okay. So let's see how the whole operation will take place. Like it is a coin of 10 and we want to just make a sum of the 10, and we can have several possible combinations. We can use a coin of 10 rupees, then we can make a sum of 10. We can use 2 rupees, 2 coins of 5 rupees each. We can make it like this, 5 and several coins of 5 coins of 1 rupees, like this. Okay, and we can also use 2 rupees coins as well, है ना, 2 2 2 2 2 2 5 are 10, or we can use 10 coins of 1 rupees each for this particular sum. But the task is use the minimum number of coins, and these are the coins like in this figure only. 1 रुपए का है, 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees, and like this. 1 to 5, 10, 20, 50, 100, 500. ये denomination के coins हैं और infinite number में हैं. So let's take an example here. If we have to achieve a sum of 93, then we need a minimum of 5 coins. We can have like a coin of 50, 20, 20, 2, and 1. So going by the greedy approach, we first pull out a coin of denomination 50. जो हमारा सम है उससे जस्ट लेस वाला कॉइन, मैक्सिमम वाला कॉइन, बड़ा वाला कॉइन. हमारे पास जो रेंज है दैट इज 1 2 5 10 50 100. ये 93 है तो हम ये नहीं ले सकते. वी कैन टेक दिस 150. नाउ आफ्टर टेकिंग द 50 वी हैव लेफ्ट 43 टू अचीव. 43 अचीव करना है तो 43 से बिलो में हमारे पास आता है और यहाँ 20 में आएगा 20. तो 43 में से हमने 20 माइनस किया 23, फिर अगेन फिर हमने 20 लिया, फिर 3 बचा. 3 बचा है तो हम क्या ले सकते हैं, उसमें 2 ले सकते हैं. 3 में 2 माइनस हुआ, 1 बचा, 1 बचा है तो एक 1 का ले सकते हैं. ओके, सो गोइंग बाय द ग्रीडी अप्रोच, वी फर्स्ट पुल आउट अ कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन 50. वी हैव 40 लेफ्ट टू अचीव. Next highest coin is 20 and therefore we'll pull that out. Then we have 23 left. After that we pull out another coin of 20 resulting in 3. We can then pull out of 2 and 1 to finally reach 0. So meaning we have to reach the sum of the 93. So as you can see, at each step the algorithm make the best possible choice. In this case, the highest denomination possible. So this is the greedy approach
for solving this particular coin change problem. This is the illustration of the whole operation which we have discussed in the previous slide. The value is 93. We are having these denominations. तो हम क्या करेंगे, इनमें से सबसे बड़ा वाला जैसे 93 है तो 93 से जस्ट छोटे वाले कॉइन का डिनोमिनेशन क्या है 50, तो वी विल टेक दैट वन। तो जैसे हमने लिया तो हमारे पास कितना बचा है यहाँ पे अभी 43, तो 43 से बिलो वाला है हमारे पास 20, हमने 20 लिया, 50 20 माइनस किया 23 तो 20 तो 23 हो गया। देन अगेन 23 से लेस वाला 20, तो 50 20 23 विल बी बैलेंस और द लेफ्ट। Now 3 से below है 2, so 50 20 22, then there is 1, so 50 20 22 and 1. So as we can see, at each step we use the highest possible coin from the denomination. So at last we can reach the value of 93 by using the 5 coins. Okay, so this is the basic algorithm for the coin change problem. Sort and denominations coin in decreasing order of the value. First step is this. Now initialize set of coin as empty. उस particular value के लिए जो हमको set of coin चाहिए, we will use a set here. So initially assume like जैसे हम एक कोई variable ले लें s, ठीक है। Now value is not while value is not 0, we will simply decrease the value by adding the coins to this particular set. So in the and denomination decreasing order में इनको initially decreasing order में अरेंज किया, जो भी हमारे पास and denomination थे। जैसे initially यहाँ हमारे पास आ गया 500, सपोज ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ये है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 500 100 50 20 एंड सो ऑन। तो सॉर्ट एंड डिनोमिनेशन कॉइन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। इनिशियलाइज द सेट, इनिशियली यहाँ कोई कॉइन नहीं है, वाइल वैल्यू इज नॉट जीरो, वैल्यू जो हमको सम पे अचीव करना है। So assume like CK is the largest coin such that value greater than CK। जैसे मैंने बताया, जैसे सपोज 93 था, 93 से जस्ट छोटा वाला कौन सा है, वो है 50। So CK is the largest coin such that value greater than CK। So if there is no such coin return, means there is no viable solution and go to step 4 means exit। अगर ये possible नहीं है, ऐसा कोई coin ही नहीं है, then we can go to the step number 4। Else include the coin in the solution, otherwise just include the coin in the solution और उस coin का जो cost है उसको हम reduce कर देंगे हमारे value में से। तो जैसे 93 था, 93 से लेस वाला जस्ट लेस वाला हाईएस्ट कॉइन 50 का है, तो 50 को हमने यहाँ ऐड कर लिया एज ए कॉइन एंड 50 वैल्यू को हमने 93 से माइनस कर दिया एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन। कब तक होगा, जब तक कि वैल्यू जो वैल्यू में है वो जीरो नहीं हो जाता। मीन्स ये हम यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लूप को रन कर दें, ठीक है। तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। For the value 50, we are having these coins 25, 20, 10, 5 and infinite number of coins are possible। Okay, so you can see here जैसे 50 का है तो 50 से जस्ट छोटा वाला कॉइन कौन सा है, 25 का, तो हमने इसको सेट में ले लिया यहाँ पे 25। अब यहाँ कितना बचा, 25 अगेन चेक इट हियर, 25 वापस 25 ले सकते हैं इसको, 25 विल बी हियर। So total coins required 2 and that will sum up to the 50। That is 25 के 2 coins चाहिए इस particular sum के लिए। So let's take this one। So coins denominations are arranged in the decreasing order। So it is 70 जो हमको sum achieve करना है। 70 से below हमारा ये set ले लेते हैं यहाँ पे हम set। तो 70 से below हो गया 25 लेने के बाद हमारे पास बचा है यहाँ पे 70 25 5 and here 4, that is 45। ये बचा 45। देन फिर इससे छोटा डिनोमिनेशन कौन सा है, 25 का, तो अगेन 25 लिया यहाँ पे। अब बचा हमारे पास 20। इससे छोटा कौन सा है, ये तो नहीं है, 20 कैन बी पॉसिबल, so we have taken there 20। So you can see here 3 coins combinations can be taken for achieving the cost of 70। 25 plus 25 that is 70 plus 20 that is 25 50 plus 20 equals 70। The coin if we want to analyze the complexity of the coin change problem, then
first of all, like we are just sorting the array of the coins of size n, तो उसके लिए हमको कॉम्प्लेक्स एक एल्गोरिथम चाहिए फॉर सॉर्टिंग द एरे, दैट इज ओ ऑफ एन लॉग एन, जैसे हम मर्ज सॉर्ट यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। तो एंड आफ्टर दैट द वाइल लूप इज एग्जीक्यूटिंग, जैसे हम वाइल लूप लगा रहे हैं और हम वाइल लूप लगा रहे हैं उसकी वैल्यू के लिए जो वैल्यू हमको गिवन है, सपोज दिस, तो सपोज द वैल्यू इज 50, और वर्स्ट केस क्या पॉसिबल है, वर्स्ट केस ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो कॉइन का डिनोमिनेशन दे रखा है वो दे रखा है 1 1 1 1 1, सॉरी 1 1 नहीं, वन ही कॉइन, यही कॉइन दे रखा है बस। वर्स्ट केस में क्या होगा, दैट दिस विल पर्टिकुलर लूप विल एग्जीक्यूट 50 टाइम्स, मीन जो उसकी वैल्यू है उस वैल्यू के टर्म में चलेगा। ओके, सो द वाइल लूप इन द वर्स्ट केस इज ओ ऑफ अमाउंट, या वो पर्टिकुलर वैल्यू जो हमको गिवन है, इफ ऑल वी हैव इज द कॉइन विद वन डिनोमिनेशन, so the overall complexity of the coin change problem becomes O of n log n plus O of amount, and it will be high as compared to like the denomination, so the complexity will be O of n log n. So basically जो हमारे पास denominations हैं उनको sort करने में जो time लगेगा, that is the main contributor in the complexity, that is O of n log n.